Good morning, everyone. Today we are going to discuss about normal flora of the body. So, first question arises, what is the normal flora? Actually, the term normal microbial flora denotes the population of microorganisms that inhabit the skin and the mucous membrane of healthy normal person. Did you get it? Normal flora means what? Basically, they are the type of microorganism which are generally present on your body and your mucous membrane also. Get it? And you know that there are n number type of microorganism that are present on your body. Even you can't count this. गेट इट सो नॉर्मल फ्लोरा इज बेसिकली व्हाट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली आप कुछ भी करें बट स्टिल दे प्रेजेंट ऑन योर बॉडी get it, so that defines the normal flora. And you know that ki normal flora also varies from person to person. It doesn't mean कि मेरे बॉडी में जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो आपकी बॉडी पे भी सेम फ्लोरा होगा. बेसिकली जो ऑक्यूपेशन होता है हमारा दैट डिसाइड्स द नॉर्मल फ्लोरा ऑल्सो. We can say that, suppose that if we are talking about the normal flora of a person who is doctor, who is going hospital regularly, so the flora of his or her body will be different from the normal person. And suppose that if some person is working in a mines, so their flora of the body will be different from the normal person. So the occupation or the personal hygiene also defines the normal flora of your body. But generally you should just remember that ki normal flora means what? There are general type of microorganism which are generally present on your body. That is your normal flora. That defines your normal flora. If you'll take bath also, if you'll wash your hand also, but after some time it re-establishes itself. So that is your normal flora. नाउ यू कैन इमेजिन अभी 5-6 महीनों में हमने कितने ऑर्गेनिज्म मारे, हाथ धोते थे, पूरा क्लीन हाइजीन करना, लेकिन कुछ भी कर ले बट नॉर्मल फ्लोरा ऑलवेज प्रेजेंट ऑन योर स्किन. Get it? That's why it is called the normal flora, which is generally present on the skin. Now, the skin and the mucus variety of microorganism that can be arranged into two groups. Generally, first is the resident flora and the second one is the transient microbial flora. So, what is the resident flora? Resident flora consists of relatively fixed type of microorganism that is regularly found in a given area at a given age. If it is disturbed, then it promptly reestablishes itself. I told you, suppose that you'll take a bath और आपने disinfectant apply किया या आपने अपने आप को proper clean किया, तो कुछ समय के लिए जो फ्लोरा होगा वो आपकी बॉडी से हट जाएगा, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद या थोड़ी देर के बाद इट रीस्टेब्लिशेस इटसेल्फ. तो दैट इज द रेसिडेंट फ्लोरा जो जनरली आपके बॉडी में हमेशा ही प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर एरिया पे. और अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया, आपने उसको मारोगे कैसे? आप ऐसे मारते नहीं बैठते हो कि इधर का फ्लोरा है, आई हैव टू किल दिस. नो, सपोज दैट आपने बात लिया या आपने सैनिटाइज किया हाथ को, अगर आपने वो ऑर्गेनिज्म को कुछ समय के लिए डिस्टर्ब भी किया है, बट आफ्टर सम टाइम इट रीएस्टैब्लिशेस इटसेल्फ, that type of flora is called the resident microbial flora. Now the second one is transient microbial flora. It consists of non-pathogenic or potentially pathogenic microorganisms that inhabit the skin or mucous membrane for hours, days or weeks. Suppose करो you are not a doctor, but suppose because of some emergency आप hospital में जा रहे हैं, regularly जा रहे हैं, तो your microbial flora will change. कुछ समय के लिए आपके बॉडी पे कुछ नॉन पैथोजेनिक या पोटेंशियली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में आ सकते हैं, बट that will not persist. Why? Because that is not your resident flora, that is your transient flora. It will persist for some hours, some days or some weeks. After that it will be removed automatically. So that is called the transient flora of the body. ठीक है. So did you understand the difference between resident flora and the transient flora?
रेसिडेंट फ्लोरा अगर डिस्टर्ब भी होता है तो इट रीस्टेब्लिशेस इटसेल्फ, बट अगर ट्रांजिएंट फ्लोरा कुछ ही समय तक आपके बॉडी पे परसिस्ट करता है, बट आफ्टर सम टाइम इट विल रिमूव ऑटोमेटिकली. Get it? So transient flora basically derived from the environment, does not produce disease and does not establishes itself permanently on the surface. So you should understand this from where you'll get the transient flora. Transient flora is basically derived, or you can say that it will come on your body from the environment. As I told you earlier, that suppose that for some case or some emergency, if you'll go to the hospital, then मे बी पॉसिबल है कि हॉस्पिटल का कुछ फ्लोरा आपके बॉडी पे आ जाए, बट इट विल पर्सिस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट इट विल बी रिमूव्ड ऑटोमेटिकली. गेट इट? वो आपकी स्किन पे परमानेंटली स्टैब्लिश नहीं हो सकता. सो दैट इज द ट्रांजिएंट फ्लोरा. So I hope you understand the difference between the transient flora and the resident microbial flora. Now we are going to study the role and advantages and disadvantages of the normal flora. So first we are going to discuss the benefit, or you can say that advantages of the normal flora. जनरली अभी तक हमने जो सुना है वो क्या सुना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. जनरली इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम सिर्फ खराब चीजों को ही याद करते हैं, जो अच्छी चीजें होती है वो हम कभी नहीं याद रखते, पर किसी ने अगर हमारे साथ खराब किया तो दैट विल हमेशा याद रखेंगे, हमेशा दैट विल ऑलवेज रिमेन योर मेमोरी. गेट इट? सो पर ऐसा नहीं होता. सो नॉर्मल जो आपके पैथोजेंस है वो सिर्फ खराब ही नहीं होते. ओनली 1 or 2% माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पैथोजेनिक. बाकी ऑल अदर 98% माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल टू यू. वो बहुत फायदे होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ अवर नेचर दैट वी रिमेंबर ओनली द बैड थिंग्स. सो I'm going to tell you what are the advantages of the normal flora. So first is the antibiotic substances produced by some of the microorganisms which have harmful effect on the pathogen. So you know that बहुत सारे organism कुछ ऐसे compound secrete करते हैं जो आपके body में normally present है, जो flora आपके body में है. Sometimes वो कुछ ऐसे compound release करते हैं, that compound is called the antibiotic, which are harmful for the pathogen. Get it? कई बार जैसे क्विनोन, ये कंपाउंड है जो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं, और वो किसके लिए हार्मफुल होता है? वो पैथोजन के लिए हार्मफुल होता है. सो दैट इज द वन बेनिफिट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा. सेकेंड, it raised the overall immune status of the host against pathogen having related and shared antigen. जनरली ये क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम को रेज करता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ इट रेज द इम्यून सिस्टम? कैसे? वो तो खुद ऑर्गेनिज्म है, बट हाउ इट विल इनहेंस योर इम्यून सिस्टम? देखो कई बार क्या होता है, डू यू नो द कंसेप्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी? आई एम गोइंग टू टेल यू इन शॉर्ट. Look, what are antigens? Antigens are the foreign substances. जब वो बॉडी में आते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है. ओके, एंटीबॉडीज क्या करती है? एंटीबॉडीज विल बाइंड टू द एंटीजन एंड इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है. तो दैट इज द एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शन. Okay, antigen is the foreign substance that may be a pathogen or the component of the pathogen. Anything can act as a foreign. This foreign substance, when it will come into the host, it will stimulate the immune response. What about what is the meaning of stimulate immune response? It will stimulate the antibody. So antibody will come and recognizes that it is foreign, it is not our part, so it will bind to the antigen. Get it? Now the question arises, how it will bind? कैसे बाइंड करती है? कैसे बाइंड करेगी? एंटीजन का कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है. आपने एंजाइम लॉक-इन की थ्योरी पढ़ी है? अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. सपोज दैट ये एंटीजन है, इसके सरफेसेस पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, प्रॉपर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटीबॉडी. गेट इट? एंड ऐसा नहीं होता कि ऐसा एंटीजन आए, ऐसा आए, ऐसा आए. किसी भी टाइप का एंटीजन आए तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एंटीबॉडी विल बी द सेम. नो,
antibody will bind to its specific antigen. The antigen antibody interactions are always specific. What does it mean? अगर ऐसा एंटीजन है तो ऐसा एंटीबॉडी होगा, ऐसा एंटीजन है तो ऐसी एंटीबॉडी होगा. आर यू गेटिंग व्हाट डज इट मीन? जैसे एंटीजन का स्ट्रक्चर अलग होगा वैसे ही क्या होगा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अलग होगा. गेट इट? अब वापस से इस पॉइंट पे आते हैं. इट रेज द ओवरऑल इम्यून स्टेटस. हाउ? सपोज करो नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा पे भी कुछ एंटीजन प्रेजेंट हो गए. तो सपोज करो नॉर्मल फ्लोरा के एंटीजन का स्ट्रक्चर ऐसा है. तो अगर किसी बाय सम हाउ अगर आपके नॉर्मल फ्लोरा का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बॉडी को पता है कि इसको नंबर को डिक्रीज कैसे करना है. बॉडी कैन मेक द एंटीबॉडीज एंड बॉडी विल कंट्रोल, योर होस्ट सिस्टम विल कंट्रोल द नंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा. गेट इट? क्यों? क्योंकि एंटीजन का स्ट्रक्चर आपको पता है. आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइट. अगर गन है किसी के पास, अगर मुझे पता है कि गन से कैसे फाइट करना है तो आई कैन वियर दी बुलेट प्रूफ जैकेट एंड आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ. अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि गन से कैसे फाइट करना है तो बॉडी को या हमें सोचने में टाइम लगेगा ना यार, हाउ टू फाइट दिस, हाउ टू फाइट दिस. सेम. तो नॉर्मल फ्लोरा क्या करते हैं, स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से, सपोज करो एंटीजन का स्ट्रक्चर ऐसा है तो एंटीबॉडी ऐसी है. तो जो पैथोजन बाहर से आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पैथोजन पे और नॉर्मल फ्लोरा पे सेम टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है. सेम टाइप ऑफ एंटीजन की वजह से क्या होता है, अगर वो पैथोजन आपके बॉडी के अंदर गया तो body will know how to fight. Why? Because of the related antigen, or you can say that because of the shared antigen. Normal flora और जो pathogen है they both contain the similar type of antigen. Because of that your body can recognize the pathogen and can produce response against the pathogen. So in this way normal flora raise the overall immune status of the host against pathogen having related and shared antigen. Okay, just please remind this, related या shared एक जैसे ही एंटीजन हो तो. ऐसा नहीं कि नॉर्मल फ्लोरा पे, इट इज नॉट पॉसिबल कि हमेशा नॉर्मल फ्लोरा पे जो एंटीजन होगा वो ही सारे पैथोजन में प्रेजेंट होता है. नहीं, देयर मे बी अ चांस. अगर ऐसा है तो नॉर्मल फ्लोरा इम्यूनिटी रेस करेगा. गेट इट? Now, the third point is it protects the host from colonizing with pathogen microbes. How it protect the host from colonization with pathogenic microbes? Suppose that there is a sofa and one person is already sit on the sofa, and suppose you come and you want to sit, whether are you able to sit on that particular sofa? No. Why? Because the space is already occupied by some person. But if the person will remove, if the person will go somewhere else, then only you can sit at that sofa. In the same way, on your skin, if normal flora is present, so if pathogen will come, so this pathogen will not find any place to attach. If pathogen wants to create a infection or a disease on your body, the first pathogen should bind somewhere, na? But normal flora is already present, then pathogen will not able to bind at your pathogen will not able to bind on your skin or anywhere. So because of that, pathogen uh, are not able to colonize your skin. Why? Because normal flora is already present on your skin, जिसकी वजह से पैथोजन को जगह नहीं मिलती बाइंडिंग की. तो in this way normal flora protect the host from colonizing with pathogen microbes. Get it? Now, अगर किसी भी चीज के फायदे होते हैं तो there are disadvantages also. So, what are the disadvantages? When individual become immunocompromised
then normal flora can cause the disease. Now, what is the meaning of immunocompromised? Immunocompromised matlab what? If your immune system is weak, अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अगर आपको कोई कैंसर है या आपको कोई डेडली डिजीज है या किसी भी वजह से, इफ यू आर वीक, इन दैट केस normal flora can cause the disease. Now, second point is when they change their usual anatomic location. What does it mean? For example, E. coli, if it's in your intestine, it will be beneficial for you. Sometimes E. coli secretes vitamin K, which is beneficial for you. But in somehow if E. coli will reach the urinary tract, in that case E. coli causes the urinary tract infection. What does it mean? E. coli can become the opportunistic pathogen. Means what? मौका मिला तो चौका मारा. मतलब क्या, अगर गलती से इकोलाई अपनी जगह पे पहुंच गया, सपोज दैट वो इंटेस्टाइन में नॉर्मल जगह पे है, तो इट विल नॉट कॉज एनी इन्फेक्शन टू यू. बट अगर गलती से उसकी एनाटॉमिक लोकेशन चेंज हो गई, इन दैट केस दे कैन कॉज द डिजीज. And the third point is certain streptococci of the mouth can causes the dental caries. जो दांत सड़ने लगते हैं ना, because of the streptococci. Streptococci are responsible. तो कुछ type of streptococci can cause the dental caries also. So these are the advantages and these are the disadvantages of the normal flora of your body. Now, there are some sterile area also. What I told you कि normal flora generally आपके body पे present होता है, but it doesn't mean कि normal flora आपके each and every part of your body पे present होता है. No, there are some sterile area also which doesn't contain any type of microorganism. For example, blood, brain, muscle, cerebrospinal fluid. These are the areas which are normally free of microorganism. ये जो भी एरिया का मैंने नाम लिया, जैसे कि ब्लड, ब्रेन, मसल, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ दे आर completely sterile. What do you mean by completely sterile? They are free from any type of microorganism. यहाँ पे कोई भी microorganism present नहीं होता है. Get it? अगर in case ब्लड में, ब्रेन में, मसल में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इफ बाय चांस अगर कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, तो व्हाट डज इट मीन? वो कैसे आया? बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन. अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है या किसी इन्फेक्शन की वजह से ही इट इज पॉसिबल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्स एंड ऑक्यूपाई ब्लड, ब्रेन, मसल और CSF. अदरवाइज इट इज नेक्स्ट टू पॉसिबल, वो नहीं हो सकता. नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता ब्रेन में, ब्लड में, मसल में. दे आर कंप्लीटली स्टेराइल. अगर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, इट इंडिकेट्स देयर इज एन इन्फेक्शन, देन ओनली यहाँ ये ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में पहुंचे हैं, आपके ब्लड में, ब्रेन में पहुंचे हैं. गेट इट? सो दिस इज अबाउट द sterile area, and we have studied advantages, disadvantages, and resident microbial flora, transient microbial flora, and normal flora. So from tomorrow we are going to study the normal flora one by one, and we are going to study also कि particular part, आपके जो बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट है, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जनरली प्रेजेंट होते हैं. वाई? बिकॉज ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं होता कि सारे बॉडी पार्ट में देयर इज अ सेम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नो, योर स्किन विल कंटेन different type of microorganism, your nose will contain different type of microorganism. हर एक body part will contain different type of organism. So tomorrow we are going to study that. So one more thing I want to tell you today is that factor influencing the normal flora. So what are the factor that influences the normal flora? So first is the local environment. As I told you that each and every part of your body contains different type of microbial flora. Why? Why? Because the environment is different in every type of every part of your body. For example, skin.
स्किन जो है, स्किन के आसपास कैसा इन्वायरमेंट है, पूरा ओपन, आने दो, वेलकम वेलकम, ऐसा वाला इन्वायरमेंट है, हर चीज खुली है वहां पे। वहाँ वो स्किन आपके इन्वायरमेंट से सबसे ज्यादा कांटेक्ट में है, तो उसका पीएच कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसका रिडक्शन वाटर लेवल कैसा है, उसका न्यूट्रिएंट लेवल कैसा है, वो सारी चीजें जो है वो स्किन के लिए अलग है, अंदर वाले पार्ट्स के लिए अलग है, नोज के लिए अलग है, और आइज के लिए अलग है, तो दैट इज डिफरेंट। तो जो लोकल एनवायरनमेंट है दैट इन्फ्लुएंस द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। एंड डाइट, आपकी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा कैसा होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द डाइट ऑल्सो, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एज। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ाऊंगी कि आपके ईच बॉडी पार्ट पे क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो कि कैसे एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका फ्लोरा क्या होगा। गेट इट? जनरली फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि जब आपका बर्थ होता है, जब इन्फेंट्स होते हैं, तो जनरली उसके माउथ में क्या माइक्रोबियल फ्लोरा होगा, वो जनरली एडल्ट वाला माइक्रोबियल फ्लोरा नहीं होगा। वो कैसा माइक्रोबियल फ्लोरा होगा, जो उसके मदर के वजाइना के थ्रू जो आया है, दैट इज द माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट इन दी बेबी। फिर जैसे जैसे सॉरी, जैसे जैसे वो बेबी बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे उसका माइक्रोबियल फ्लोरा चेंज होता जाएगा। सो एज भी जो है और डाइट है, वो दोनों ही आपका क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो इन्फ्लुएंस करता है नॉर्मल फ्लोरा को। ठीक है, नाउ योर हेल्थ कंडीशन, आपकी कैसी हेल्थ है, आप वीक हो, आप स्ट्रांग हो, व्हाट डू यू मीन बाय वीक, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, ठीक है, तो वो भी अफेक्ट करता है नॉर्मल फ्लोरा को। एंड इफ यू आर ऑन एंटीबायोटिक्स, अगर इफ यू आर टेकिंग एंटीबायोटिक्स, देन ऑल्सो आपका नॉर्मल फ्लोरा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स विच किल्स द बैक्टीरिया। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो मे बी इट विल किल योर नॉर्मल फ्लोरा ऑल्सो, सो आपका नॉर्मल फ्लोरा उस समय डिस्टर्ब हो सकता है। तो दैट these are the factor which influences the normal flora of the body. I hope आपको समझ में आया होगा what is normal flora, कौन से types के होते हैं, how what are the factors which influences the normal flora, and main thing, what are the advantages of the normal flora and what are the disadvantages of the normal flora. So I think for today it is more than sufficient. So thank you.